I live inside my own world of make-believe. मेरा बुलेट बोल रहा तो वो सही लगे आपकी अपने चमकती रहे। और चलो चलते हैं फिर। पानी से। अब इसको धोएंगे ना साबुन से ना
तो ला रहे हैं। बाइक धुल चुकी है, अब आपको दिखाता हूँ बाइक। भाई शाइन देखो, एक नंबर है, एक नंबर। देखो तोड़ आई है, कपड़ा मारने के बाद देखते हैं कितनी तगड़ी आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा शाइन है, इंजन में भी हटे गया। आज मैं कपड़ा मारता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाइयों हम मारते हैं इसमें कपड़ा, और कपड़ा जो आपको यूज़ करना है वो होना चाहिए
खराब लग चुका है इसमें कपड़ा। अब मारेंगे इसे पॉलिश यार मैं लाया था इसमें रॉयल एनफील्ड से, मेरे दोस्त है उसने मेरे को दे दी थी। रॉयल एनफील्ड की पॉलिश है वो ऐसी है कुछ, मैंने इसमें डाल दिया, परफ्यूम का था इसमें डाल दिया वाइट कलर की होती है, तो इससे करेंगे इसको साफ। तो गाइस अब इसमें मारेंगे पॉलिश मारने के लिए मेरे पास ये पट रखा है, कपड़ा सा है, ये यूज़ करेंगे। पर आपको भाई सूती कपड़ा यूज़ करो तो वो बहुत बेस्ट है, सूती कपड़े से हमेशा पॉलिश अच्छी लगती है। तो फिलहाल तो ये यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे सिनेमैटिक। बाइक धुल की पॉलिश लगी, सबसे मेन काम रह गया वो है अपना लुब्रिकेंट का। ये मैंने यार रॉयल एनफील्ड से लिया था, रॉयल एनफील्ड का ये कंपनी का, रॉयल एनफील्ड कंपनी का। तो अब इससे चैन को लूप करेंगे और फिर चैन इससे स्मूथ हो जाएगी। चलो करते हैं। तो किक मार के आप करेंगे बाइक को स्टार्ट, सेल्फ से लेना कभी गाड़ी छुट्टी होती है। किक से स्टार्ट अब करते हैं। अब हमने फर्स्ट गियर में डाल लिया और मारेंगे लूप। अच्छी तरह चेक कर लो। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, और लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और इसका एक और बुलेट का आने वाला है वीडियो जिसमें क्रोम के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और इसमें कैसे क्रोम को अपने चमकाया भी, क्योंकि इसमें पानी के दाग लग जाते हैं, वो जाते नहीं हैं। तो इसलिए वो आपका वीडियो अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और गाइस यार सब्सक्राइब तो करते हो और बेल आइकन को पक्का दबाया करें यार। I live inside my own world of make-believe.